Hi guys, I'm Nishi Malvi and welcome to the another YouTube video. Okay, so in the last YouTube video, in the last class, I discussed about the capital allowance. So in the today's class, we will complete that particular capital allowance. Okay. One more thing, I got a feedback that I should record lectures in Hindi. Okay, then we'll record in Hindi. Okay. All right. Let's begin. चलो start करते हैं. ओके, तो सबसे पहले जस्ट एन ओवरव्यू हमने क्या क्या किया लास्ट क्लास में. जस्ट गिव एन ओवरव्यू. ओके, हमने स्टार्ट किया कैपिटल अलाउंस. ओके, कैपिटल अलाउंस जो है आपको बिजनेस के ऊपर मिलता है एंड द रीजन इज जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपकी डेप्रिसिएशन को कंसिडर नहीं करता. तो बिजनेस में जो भी प्लांट एंड मशीनरीज है उसके ऊपर आपको कैपिटल अलाउंस मिलता है. ओके, इसीलिए आप देखोगे आपका टैक्सेबल प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट, net profit will be different. Okay, and we also saw that there are total three types of capital allowance. One is annual investment allowance, second one is return down allowance, third one is your FI first year allowance. Okay, this one, third one, this one. Okay, अभी एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस है जो आपको पर अकाउंटिंग ईयर मिलता है ऑफ 100 1 मिलियन, सॉरी नॉट 100, ऑफ 1 मिलियन. ओके, अभी कैसा है, ये 12 मंथ्स के लिए मिलता है. अभी जो भी कंपनीज ऐसी है जिसका अकाउंटिंग पीरियड लेस देन 12 मंथ्स है और मोर देन 12 मंथ्स है, वो इसे इसको टाइम अपोर्शन कर सकते हैं. 1 million divided by 12 multiply whatever the time period is. Okay, that will be your annual investment allowance for that particular year. Annual investment allowance can be claimed on plant and machineries. Okay. Okay. All right. Now let's see what is written down allowance. हमने written down allowance ये देखा जिसमें main rate pool assets है and the special rate pool assets है. Special rate main rate pool assets का written down allowance per year है 18% and जो भी special rate pool assets है उसका per year percentage है 6%. Okay, 6% allowance आपको per year मिलता है. स्पेशल रेट पूल असेट्स में आपके आते हैं लिफ्ट, एस्केलेटर्स आ गए, इलेक्ट्रिकल हीटिंग सिस्टम आ गया, लाइटिंग सिस्टम आ गया, वेंटिलेशन, एयर कूलिंग, प्योरिफिकेशन, ये सारे आ गए. और वन मोर थिंग, लॉन्ग लाइफ एसेट्स भी आ गए और मोटर कार जिसकी CO2 एमिशन मोर देन 50 ग्राम्स होगी वो. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स सी. इसके अलावा हमने देखा कि व्हाट इज मोटर कार अलाउंस. हम अलग से देखते हैं. मोटर कार में ऐसा है, जो भी मोटर कार आपकी 0 to 50 ग्राम्स के अंदर है, बीच में है, वो आपकी होगी मेन रेट पूल, वो आपकी मेन रेट पूल में के अंदर क्लासिफाई हो जाएगी. और जो भी मोटर कार आपकी मोर देन 50 ग्राम्स उसका CO2 एमिशन है वो होगी स्पेशल रेट पूल. जो भी कार्स आपका फर्स्ट टाइम परचेज है एंड जीरो CO2 एमिशन है, विच मीन्स विच इज एन इलेक्ट्रिक कार, जो भी इलेक्ट्रिक कार है वो आपकी हो जाएगी. उसके ऊपर आप 100% FIA फर्स्ट ईयर अलाउंस आप क्लेम कर सकते हो. ठीक है. और हाँ, ये FIA है, ये टाइम अपोर्शन नहीं है. बट जो भी आपका ये रिटर्न डाउन अलाउंसेस है, ये भी टाइम अपोर्शन है. अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड लेस देन 12 और मोर देन 12 है तो डिवाइड बाय 12, 18% डिवाइड बाय 12 और 6% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय द अकाउंटिंग पीरियड. ओके. उसके बाद एक और चीज हमने देखी कि जो सेकेंड हैंड परचेज जो मोटर कार है, 0% CO2 एमिशन हो, इलेक्ट्रिक कार हो, वो आपकी मेन रेट पूल में क्लासिफाई हो जाएगी. वन मोर थिंग, ये जो भी मोटर कार है दैट नेवर क्वालिफाइज फॉर EIA. ओके, EIA इसके ऊपर कभी आप क्लेम नहीं कर पाओगे. उसके बाद हमने देखा फर्स्ट ईयर अलाउंस जो है 0 CO2 एमिशन वाली इलेक्ट्रिक कार के ऊपर 100% मिल जाती है. ओके. ना उसके बाद हमने देखा कि जो डिस्पोजल प्रोसीड्स, अभी डिस्पोजल प्रोसीड्स में क्या है, लोअर ऑफ योर सेल्स एंड कॉस्ट, उस वैल्यू से आप डिडक्ट कर दोगे जो भी आपका फुल वैल्यू ऑफ द एसेट है. ओके. तो सॉरी, यस, लोअर ऑफ जो भी बैलेंस है उसे आप डिडक्ट कर दोगे. ओके, पूल में से. ऑलराइट. उसके बाद हमने देखा स्मॉल पूल एसेट्स.
वो क्या होता है, जैसे आपका वो जो भी पूल बैलेंस है, वो पूल बैलेंस जब आपका 1000 से कम हो जाता है, तो दैट जिस ईयर में वो 1000 से कम जो भी पूल बैलेंस हो जाता है, उसके ऊपर आप अलाउंस क्लेम कर सकते हो। जो भी जितना भी बचा है पूरे के ऊपर यू कैन क्लेम द अलाउंस। ओके। उसके बाद हमने देखा कि नहीं, टुडे नाउ विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। ओके। सो आज हम स्टार्ट करेंगे जस्ट अ सेकेंड, which is your private trade pool and short life assets. Okay, private pool assets and the short life assets. Let me write with another colored pen so that it's easy to identify, right? Yes. Private pool assets. Okay. इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी कार परचेज की, कोई भी सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप बिजनेस होता है, उसमें ज्यादातर ऐसा होता है। जैसे सपोज आई हैव माय ऑर्गेनाइजेशन, आई परचेज्ड अ कार। अब मैं कभी कभी वो कार प्राइवेट यूज के लिए भी करती हूँ, तो जो भी प्राइवेट यूज है उसके ऊपर मुझे कभी भी कोई अलाउंस नहीं मिलेगा। जो भी सिर्फ बिजनेस यूज प्रोपोर्शन है, सिर्फ उसी के ऊपर मुझे अलाउंस मिलता है। तो जैसे आप ना अपना फॉर्मेट ऐसे बनता है, मेन रेट पूल, एस आर, नहीं एस आर पहले आता है, MRP, private trade pool, PRP, and the allowance। यहाँ आप ये तो करते हो। तो जो भी आपका प्राइवेट ट्रेड पूल असेट वाला जो भी असेट है जो प्राइवेट ट्रेड पूल के अंदर आता है, अभी जैसे कार है, ठीक है, कार का एग्जांपल लेते हैं जिसका CO2 एमिशन है 50 ग्राम से ज्यादा। ओके, लेट्स से इट्स 110 ग्राम्स। ओके, तो अभी वो असेट इसके अंदर फॉल करता है, जो भी वैल्यू इसके अंदर फॉल करेगी, इसके अंदर आप जैसे आप 6% प्राइवेट SRP एसेट्स का क्लेम करते हो, वैसे 6% अलाउंस मतलब रिटर्न डाउन अलाउंस इसमें डिडक्ट करोगे। यहाँ पे आपकी टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी। बट इस यहाँ पे जो आपका अलाउंस आएगा ना, इसका जितना बिजनेस यूज प्रोपोर्शन है, सिर्फ उतना ही अलाउंस आपको मिलेगा फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। ओके। और जब भी आप ये प्राइवेट ट्रेड पूल एसेट को सेल करते हो, तो आपकी जो टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू है उसमें से डिडक्ट हो। ओके, सो या दैट्स ऑल। नाउ व्हाट इज वन मोर टॉपिक which is your short life assets। short life assets, इसमें क्या होता है कि जो भी ओनर है, जो भी बिजनेस ओनर है, दे कैन ऑप्ट आउट, दे कैन इफ दे वांट दे कैन ऑप्ट एन एसेट फॉर एन शॉर्ट लाइफ एसेट। ओके, बट उसकी एक कंडीशन है कि जो भी आपका शॉर्ट लाइफ एसेट है, वो असेट आपका 8 इयर्स के अंदर अंदर सेल हो जाना चाहिए। ओके, अगर वो नहीं हो रहा है, तो फिर आप उसके ऊपर उसको वापस रिक्लासिफाई कर दोगे, जो भी आपका पूल में है, उस जिस पूल में वो फॉल करता है, उस पूल में आप क्लासिफाई रिक्लासिफाई कर दोगे। ओके, इसके ऊपर आप एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी क्लेम कर सकते हो। सो मस्ट बी सोल्ड, मस्ट बी सोल्ड विद इन 8 years or else reclassify। ओके, आई वॉन्ट यू गाइस टू मेक नोट्स। ओके, क्योंकि क्या आता है जब एग्जाम टाइम पे ना, आपको जब आप अपनी खुद की बनाई हुई नोट्स पढ़ोगे ना, उसी से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। बाकी कोई भी नोट्स पढ़ोगे उसमें ठीक है, बट अच्छी होगी बट फाइन, खुद की बनाई नोट्स ज्यादा बेटर। And if you write it or if you type it, it's fine. You'll be able to retain it. You'll be able to remember it. Okay. And text में तो और एवरीथिंग इज लाइक आपको बस रूल्स याद रखने हैं। ये रूल्स याद रहेगा, टेक्स्ट हो गया, ए टेक्स्ट भी हो गया आपका। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हाँ, इसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी ही जो भी प्लांट एंड मशीनरी सारे ही क्लासिफाई होते, एक्सेप्ट एक्सेप्ट सॉरी कार्स, आई एम सॉरी, या एक्सेप्ट कार्स। ओके, प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी एक्सेप्ट कार्स।
ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर यस, दैट वन मोर थिंग, AIA इज अवेलेबल, annual investment allowance, right? Okay, so yeah, that's it. Now, one more thing, I want you to look at this format first before we begin solving questions. This format को देखो एक बार. This is the format I took out from your ACCA Study Hub itself. Okay. ऑलराइट, देखो, आपका जो भी, जब भी आप कैपिटल अलायंस का क्वेश्चन करो तो दिस शुड बी योर फॉर्मेट. ओके. Special rate pool, main rate pool, short life, car with private use, and whatever the allowance claim. And this here you'll claim for EIE. Okay, you can write it down. So why the special rate pool here सबसे पहले क्यों आता है? क्योंकि क्या आता है, इसके ऊपर रिटर्न ऑन अलाउंस आपको 6% मिलता है. वैसे ही उसी के कारण जस्ट लाइक मतलब जैसे रिटर्न ऑन अलाउंस 6% मिल रहा है, उसी रीजन से आपका जो भी एआई है वो सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे स्पेशल रेट पूल एसेट्स के ऊपर क्लेम करने की. ओके. उसके बाद आप प्रायोरिटी दोगे मेन रेट पूल, शॉर्ट लाइफ एसेट्स, ओके, एंड एनी अदर एसेट्स, प्राइवेट यूज के ऊपर ये क्लेम मिलता है. ओके. और जो भी बिजनेस यूज प्रपोर्शन है सिर्फ उसी के ऊपर क्लेम होता है, बिजनेस प्राइवेट यूज के ऊपर नहीं हुआ. सॉरी, या सॉरी, वन मोर थिंग, एआई कैन नॉट बी क्लेम फॉर कार्स. ओके, सो यू डोंट वरी अबाउट द कार्स थिंग. ओके, इफ इट्स फॉर एनी अदर एसेट देन यू क्लेम इट फॉर द बिजनेस यूज. अगर वो कार्स है तो आप उसके ऊपर EIA क्लेम नहीं करोगे. ठीक है. यहाँ पे अलाउंस क्लेम में आ जाएगा. अब यहाँ देखो, वॉट एवर द रिटर्न डाउन बैलेंसेज यू विल ब्रॉट फॉरवर्ड, जो भी आप है वो नोट डाउन करोगे. उसके बाद जो भी एडिशन है जो EIA को जिस EIA से क्लेम होंगे, EIA एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस से क्लेम होंगे, वो सारे इधर आ जाएंगे. और उसके बाद आपका प्राइवेट यूज ऑफ द कार्स जो भी है, कार्स आएगी. ओके. यहाँ पे कार्स आएगी. Yeah, I don't know. They have directly given the private use of the car example. Fine, if there is any other asset, you'll use the private use here, and then after that you'll get do for the any additions of the car. Okay. उसके बाद आपका आएगा deduction, whatever the disposals you make, which is lower of your disposal proceeds or cost, whichever value is, will deduct it. और उसके ऊपर आप दोगे रिटर्न ऑन अलाउंस ऑफ द 6% और द 18%. स्पेशल रेट पुल 6%, इसकी इधर 18% आ जाएगा. अभी उसके बाद जो भी FIA, जो भी 0% जीरो कार्बन एमिशन कार्स है, वो उसके बाद आप एडिशन पे डाल दोगे. इधर आ जाएगा आपका FIA. ओके. एंड अलाउंस कॉलम में उस एडिशन में आ जाएगा. उसके बाद आप उसके ऊपर 100% अलाउंस क्लेम कर दोगे, विच विल गो हियर. ओके. यू विल गेट द carry forward balance for the next year. Okay, let's do a question. All right, guys, let's start solving a question. Okay, so this question I've taken up from your ACCA Study Hub itself. Mr. Pierre prepares annual accounts to 5th April. The text written on values brought forward on 6th April 2022 were for the main rate pool assets, it was 100,000. For special rate pool, it's 80,000. Additions at the 2 year ending for 5th April 2024 were as follows. So 10 June 2022, this falls under 2023, right? For the year ending 2023. Okay. Long life asset. Long life asset is a part of what? SRP assets. Okay. Uh, so yeah, of 1,70,000, 170,000 pounds. 15th August, car 1 CO2 emission of 110 grams for 25,000. Car 2 CO2 emission for 40 grams, 14,000. Less than 50 grams, which is main rate pool. This is special rate pool, okay? Car 1 is used by 80% by Mr. Pierce. So this one is for the private use. Car 2 is used 60% by an employee. So whatever the car used by an employee, that is not considered as an car for the private use. Okay, so it's Mr. Pierre's company or business. If Mr. Pierre is using for the private use, that is considered for the private use. Okay,
Okay, all right. Required, calculate the capital allowance for each of the 2 year ending 5th April 2024. So I have already, okay, so yeah, let's start. This one shortcut, I'll keep reminding you until you guys remember it, okay? Alt key on your left hand side and 156 numeric. You'll get your pound sign, okay? You can apply, you can give this a note or else you can add the pound sign, whatever questions you do, okay? So first of all, it will be AIA, SRP assets. Okay, the reason SRP assets is uh, because it has less rate. SRP 6%, right? MRP, you can add pound sign as well. It's fine. I'm just adding for you guys to remember. 18%. Then you will create a private pool. Private pool. The allowance for whatever assets fall into private pool will be similar. Like if it is a part of like C, car A, car one, yeah. Car one is for having CO2 emission of 110 grams. This is an SRP asset. So the written down allowance for that SRP asset will be for this asset, even though it's a private pool part, it will be 6% only, okay? And you have allowance claimed. Allowance claimed. For your easy understanding, I have pasted the format here as well, okay? I'll share the Excel sheet, don't worry. It will be uploaded into the Google Sheets. Okay, you guys can refer to it. All right, let's start. So for the year ended 5th April 2023, this is brought forward balance of April 2022. Okay, so that will be, and for the, we'll calculate for the 2023. So written down value brought forward at 6th April 2022. Okay. Your SRP is 80 and 100. 80,000 and 100,000. Now, as per the format, we will claim, well, first of all, whatever the additions claim for, you can claim for the AIE, will write that. You'll give priority to SRP assets. The reason is because on SRP assets, the written down allowance is just 6%, and on main rate pool assets, it's 18%. That's right. Okay. Additions qualifying for AIA. Okay. First one is long life asset. Please make sure from the day one, from first practice itself, you work on your presentation skills, okay? And typing practice. It's not something to leave it for the last. Okay. 1,70,000. Yes. Again, AIA 1,70,000. Now in the allowance column, whatever allowance I claim, I will add that. This is my SRP asset. Okay. Now see, here it falls the private, in the, we don't have short life asset. Okay. Right now we don't have short life asset. We have private use of the car and car company car. Okay. So first of all, we'll add up the private use of the car, which one it's 25,000. Private car one, CO2 110 grams per kilometer, yeah, per kilometer, which falls under your प्राइवेट ट्रिप को ठीक है सॉरी कंटिन्यू इन हिंदी ओके सॉरी या अभी कार टू देखते हैं कार टू है आपका 40 ग्राम्स का CO2 कार टू 40 ग्राम्स किसमें आएगा मेन रेट पूल में आएगा ना 14,000 यस अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल बैलेंस ऑफ इसका टोटल बैलेंस कैलकुलेट करते हैं
There's one more shortcut. Sometimes it does work and sometimes it doesn't. Control Shift up or okay up arrow. Or else what you can do, क्या कर सकते हो आप sum जैसे सिलेक्ट करना ना शिफ्ट 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 दिस इज तो डेफिनेटली ये तो पक्का काम करता है पीसीसी स्टडी एग्जाम्स में। शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है अप एरो ठीक है। यू डोंट हैव टू लाइक माउस को यूज करने की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स याद रखो काम आएंगे। नो नीड टू डू दिस। ओके नाउ यू विल डू फॉर WTA। WTA फॉर दिस SRP MRP and private. The reason why I'm doing separately because it's easy for you to understand, okay? वरना क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हो। देखो इस पे 0.6% है राइट 48। इस पे हाँ वन मोर थिंग यहाँ पे इन दैट प्रीवियस क्वेश्चन आई डिड माइनस एंड above question in exam it doesn't work equal to minus will work okay multiply 0.18 this will be your allowance for the private pool 0. Okay, this is SRP asset part. Okay, I forgot to add the minus 0.6. Okay, 0.06. This big, this gives a big change in your answer. Okay, अभी ये देखना है इसमें से हम अलाउंस कितना क्लेम करेंगे। देखो इसके लिए तो पूरा अलाउंस होगा इसके लिए भी पूरा अलाउंस होगा। इसके लिए ओनली योर जितना बिजनेस यूज पोर्शन है उतना ही। कितना है बिजनेस यूज पोर्शन 80% इज यूज बाय फॉर द प्राइवेट यूज। तो अभी बिजनेस यूज हो गया आपका 20% तो इसका 0.2। ओके ये हो गया आपका अलाउंस। उसके बाद हम देखते हैं रिटर्न डाउन कैरी फॉरवर्ड जो है नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करोगे। कंट्रोल आर इसका नीचे अलाउंस अलाउंस नाउ ये जो अलाउंस है वो पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट में से डिडक्ट हो जाएंगे। मीन्स अगर प्रॉफिट दिया होता फॉर द ईयर एंडेड 5 अप्रैल 2023 तो उसमें से हम ये डिडक्ट करते ठीक है। उसके बाद आपकी वैल्यू है just a second yes now let's do for the year ended 5 अप्रैल 2024 के लिए देखते हैं ठीक है। द सेम वे इन द बुक्स ऐसा नहीं दिया होगा कि आपको कैरी फॉरवर्ड अलग से बना रहे हैं कि नहीं बना रहे बट आई वुड रिकमेंड कर लो। एक ही तो स्टेप ज्यादा जा रहा है। सी दिस वन दिस वन ओके। अभी चेक whether there is any disposal or not और एडिशन एक भी है नहीं। तो ठीक है जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे जो अलाउंस हमने कैलकुलेट किए हैं वैसे ही हम करेंगे बट जस्ट डिफरेंस कि 6% सॉरी 18% 6% एंड दिस इज 6% अगेन बिजनेस यूज आ गया इसका 282 ठीक है। अब अलाउंस कॉलम देखते हैं ओके अलाउंस ओके ऑलराइट दैट्स इट। था ना ये इजी क्वेश्चन। जस्ट आपको क्या करना है फॉर्मेट याद रखना है बस और कुछ नहीं है। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ टैक्स एंड ईटीएक्स। आपको जो रूल्स है जो फॉर्मेट है वो याद रखना है जो भी वैल्यूज दिए उस फटाफट फटाफट पुट कर देना है ना। और कुछ तो है ही नहीं इसमें। ऑलराइट
let's do next one. Okay, all right. Let's see one new topic, capital allowance itself, that is cessation. Okay, we do it with another color so that you guys can see cessation. Okay. So what happens whenever there is any cessation of the business in that period? First of all, there are some steps I would add any additions, additions in that particular period, okay, and or else deduct any disposals, disposals, and third one, calculate the balancing allowance or charge on each pool by bringing written down value to nil, okay, or else zero. Okay, so what happens, क्या होता है, जिसका जो भी बिजनेस का सीजेशन होता है, मतलब बिजनेस सीज्ड हो गया, उसके बाद कंटिन्यू नहीं करेगा, ठीक है। उस टाइम पे आपको जो भी बैलेंस है पूल का, उसके ऊपर बैलेंसिंग चार्ज या बैलेंसिंग अलाउंस कैलकुलेट करना है, ओके। और जो भी बैलेंसिंग अलाउंस क्या होगा, लाइक आफ्टर डिस्पोजल जो भी आपका पार्ट है, आफ्टर डिस्पोजल और एडिशन, आपका पॉजिटिव वैल्यू होता है, वो आपका बैलेंसिंग अलाउंस हो गया। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो आपका हो गया बैलेंसिंग चार्ज, ठीक है। आपको अपना बैलेंस निल करना है, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट, ठीक है। लास्ट पीरियड जो होता है अकाउंटिंग का, उसमें नो रिटर्न डाउन अलाउंस, ठीक, नो WDA, FYA भी नहीं होगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा उस पीरियड पे, ठीक है। और AIA भी नहीं मिलेगा लास्ट पीरियड पे, ओके। Alright, let's do one question for this. This is the question same from the ACC study hub itself. There's a shortcut to take screenshot of your screen, that is Windows Shift S. You can do that. Alright, alright. So this is your fifth question. You can also do study text questions, okay? Do that. All right. See, Mr. Cherry, who prepares annual accounts to 31st March, ceased trading on 31st March 2024. Tax written down value brought forward at 1st April 2022 were this one. Okay. So this is 2 years ending period are given. See, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि 2022 दिया है और उसने बोला है क्वेश्चन में कि 2024 में एंड हो रहा है, तो समझ आ जाता है कि ये 2 अकाउंटिंग पीरियड का है, ठीक है। स्पेशल रेट पूल आपका रिटर्न ऑन वैल्यू है 20,000, मेन रेट पूल हो गया 95,000, कार CO2 एमिशन 45 ग्राम्स, 50% प्राइवेट यूज, या ये तो बहुत मस्त क्वेश्चन है। फिर 13,000 हो गया, जिसमें ये अगेन हो गया मेन रेट पूल, ओके, इस पे प्राइवेट रेट पूल भी जाएगा। शॉर्ट लाइफ एसेट हो गया आपका 10,000, एंड एडिशंस एंड डिस्पोजल इन द 2 year एंडिंग 31st March 31st March 2024 वर एज फॉलोज। एडिशन जो है 1st May 2022 को दिया है, सो ये अपना 31st March 2023 में फॉल करेगा, है ना। फैक्ट्री मशीनरी, ओके, प्लांट एंड मशीनरी में आएगा, ओके। इसके ऊपर हम EIA क्लेम कर सकते हैं। अभी एक और दिया है, डिस्पोजल्स हैपनिंग इन 20th December 2022, अगेन दिस फॉल्स अंडर, ओके,
year ending 31st March 2023, 31st March 2024, कार CO2 emission 45, ओके डिस्पोजल्स दिए हैं। एक डिस्पोजल जो है लॉन्ग लाइफ एसेट का वो 23 ईयर एंडिंग में हो जाता है। उसके बाद की जो भी डिस्पोजल्स है सारे हो रहे हैं। ओके, कार CO2 emission 11,000, short life asset 3,000, special rate pool asset 1,500, main pool asset 46,000. Calculate the capital allowance for each of the following 2 years ending 31st March 2024, assuming all the possible claims are made to obtain the maximum capital allowance. Okay, just a second. Let me check whether there is a separate format for this or not. The one which we जो हमने पहले देखा, that is perfect for this one as well. Okay, alright. Short life asset भी आएगा ना, short life brought forward balance। यहाँ पे एडिशन भी दिया होगा। अगर ये डिस्पोजल 8 ईयर्स से के बाद होता है तो आप इसे नोट दोगे कि ये शॉर्ट लाइफ एसेट अब क्लेम नहीं होगा क्योंकि इसका डिस्पोजल विद इन 8 ईयर नहीं हुआ है। ठीक है, सो दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ATX, टेक्स्ट तो बेस है आपका, तो ये लेक्चर्स आप भी देख सकते हो। कुछ कुछ एडिशन ही होता है जो ATX में होता है, और बाकी टेक्स्ट का जो सिलेबस है वो हेल्पफुल है। लाइक देर आर माई स्टूडेंट्स हु watched ATX lectures and then cleared text, तो दोनों ही यूजफुल है आपके लिए। Alright, let's start. Year ended 31st March 2023. Written on brought forward from at 1st April 2022. 20,000 SRP, 95,000 टैब की, यूज टैब की, तो जो फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, मतलब जहाँ फॉर्मूला अप्लाई होता है वहां होगा ये, बट हाँ आदत रखो टैब की साइड में जाने के लिए। एंड 10,000 शॉर्ट लाइफ। ऑलराइट, एडिशंस एडिशंस qualifying for AIA. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स फैक्ट्री मशीनरी, और ये हो गया मेन रेट पूल एसेट। ओके, सो फैक्ट्री मशीनरी वैल्यू इज 2 lakhs 200,000। ठीक है, 200,000। एंड लेस AI जो भी प्राइवेट डिस्पोजल्स आएगा, प्राइवेट यूज ऑफ द कार आएगा, उसके बाद हाँ डिस्पोजल। ओके, वन मोर थिंग, द रीजन आई हैव गॉन टू फॉर्मेट इज क्योंकि मुझे पता था कुछ है जो प्राइवेट यूज, बट यहाँ पे कोई एडिशन नहीं है। ये जो है ये आपका ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस है। ठीक है, तो आप इसे जो 50, लेट मी जस्ट कंफर्म वेदर आई हैव एडेड इट, 13,000, यस डन। तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड है, एडेड नहीं है। अगर एडिशन होता तो डिस्पोजल से पहले हम उसे शो करते, बट ये एडिशन नहीं है इसलिए हम उसे बाद में कंसिडर करेंगे। अभी पहले हम डिस्पोजल प्रोसीड्स को देखेंगे। डिस्पोजल प्रोसीड्स का एक रूल याद है, लोअर ऑफ योर डिस्पोजल प्रोसीड्स और कॉस्ट, विच एवर इज लोअर। लॉन्ग लाइफ एसेट कॉस्ट वाज 40,000, 19,500। मतलब देखो बहुत सारे एसेट्स होते हैं, उसमें से एक 19,000 40,000 वाला एसेट सेल किया। सो SRP का बैलेंस आपका ऑलरेडी 20,000 है। डिस्पोजल प्रोसीड्स इज योर 19,500। ओके, you have to calculate the return on allowance. Okay, one more thing here, यहाँ पे आपका अलाउंस जो क्लेम किया वो भी तो ऐड करोगे, और कोई डिस्पोजल्स तो नहीं है ना नेक्स्ट ईयर में। इसके ऊपर रिटर्न ऑन अलाउंस देखो, ये लास्ट ईयर नहीं है इसीलिए हम इस ईयर पे तो क्लेम करेंगे, उसके बाद वाले ईयर पे हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। SRP है तो 6%, 0.06। ओके,
ओके, मोर थिंग, वन मोर रूल। जो भी ये स्मॉल पूल का पार्ट हो गया, जो एसआरपी एसेट है, ये इसका जो बैलेंस है लेस देन 500, लेस देन 1000 है। इफ यू रिमेम्बर स्मॉल पूल एसेट, हमने देखा था अगर किसी पूल का बैलेंस लेस देन 1000 हो जाता है, आप पूरा ही डिडक्ट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरा ही अलाउंस दे दोगे फॉर दैट पर्टिकुलर एसेट यहाँ पे। ओके, एसआरपी, एसआरपी, एमआरपी, प्राइवेट पूल, शॉर्ट लाइफ एसेट। Okay. यहाँ पे you will give the 18%, 0.1. Okay. यहाँ पे you will give okay, just look at the asset. Private CO2 emission 45 grams है, तो 18% आपका हो जाएगा, 18%। शॉर्ट लाइफ एसेट के ऊपर भी 18% अलाउंस मिलता है आपको। ओके, 18%, 1800, इसमें तो पूरा मिलेगा। सो दिस वन, सो दिस इज योर कैरी फॉरवर्ड बैलेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, जितना भी अलायंस क्लेम किया है सारा ही ऐड ऑन कर दो। ठीक है, रिटर्न ऑन वैल्यू कैरी फॉरवर्ड। ओके, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर ईयर एंडेड 31st March 2023, and this is the allowances claim. Okay, start again. You can do continuation, that is also fine. For the year ended 31st March 2024, 2023. Okay. Control R in Excel. This doesn't work in your ACCA study hub, ACCA exams. Okay, this only works in your this platform. Okay, let's see whether there are any disposals on. Yes, there's a disposal of car. CO2 emission is 45 gram. This is a private use car disposal. Okay. Uh, what is the cost? 13,000. Lower is the disposal proceeds, so we'll deduct that. Okay. Um, hmm, well, disposals. First one is the car, private use, that too. Value is 11,000. And the second one is short life asset, 3,000. So 3,000 minus 3,000. And next one is your special rate pool asset, 1,500. And main rate pool asset, 46,000. Okay. 1,500 and your 46,000. Now let's calculate balancing charge or balancing allowance. देखो, ये जो माइनस बैलेंस आता है दैट इज योर बैलेंसिंग चार्ज। ओके, कीप इट बिलो। माइनस वैल्यू जो आता है वो आपका बैलेंसिंग अलाउंस, बैलेंसिंग चार्ज हो गया। ये मतलब होता है कि आपने ऑलरेडी जो भी आपका अलाउंस था उसका ऑलरेडी क्लेम कर दिया था और ये एक्स्ट्रा अलाउंस क्लेम किया, तो जो भी आपका अलाउंस कॉलम है उसमें से ये हम डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी आपके पास एक और बैलेंसिंग चार्ज है, बैलेंसिंग चार्ज, बैलेंसिंग चार्ज फॉर प्राइवेट। ओके,
तो ये जो भी वैल्यूज है इसे मैं थोड़ा नीचे ले लेती हूँ। ओके, इसके अंदर प्राइवेट पूल जो भी है उसका सिर्फ 50% बिजनेस यूज पोर्शन है, तो सिर्फ 50% ही डिडक्ट होगा इसमें से, पूरा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो है बैलेंसिंग अलाउंसेस। ओके, आपको जो पूल बैलेंस है वो तो निल करना है। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू, ये ना, यस, रिटर्न डाउन कैरी फॉरवर्ड, वो निल करना है। अब वो निल कैसे होगा, जब आप सब कुछ ही क्लेम कर दोगे अलाउंस में। ओके, दिस वन, दिस वन, तो आपका अलाउंस कॉलम हो गया माइनस माइनस, तो प्लस आ गया ना। दिस इज नेट अलाउंसेस क्लेम, अलाउंसेस क्लेम, अलाउंसेस, एंड ये निल आ गया, और आपका इधर आएगा नेट अलाउंस क्लेम, नेट अलाउंसेस क्लेम। ओके, सीधा अलाउंस कॉलम, सिर्फ एक पर्टिकुलर लास्ट ईयर का ही देखना, डोंट ऐड उसके पहले का। सो ओके, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ माइनस माइनस की साइन का गड़बड़ है, हमें डिडक्ट करना है ना, क्योंकि ये बैलेंसिंग चार्ज है इसलिए। ओके, सो दिस इज इट, दिस इज योर क्वेश्चन डन। Okay, there are some notes you can write. So see, one is या पुल कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। देखो, पुल बैलेंस या 1000 से कम हो गया, इसलिए हमने पूरा ही अलाउंस दे दिया। ठीक है, लास्ट ईयर पे कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते, रिटर्न ऑन अलाउंस नहीं मिलता, FIA नहीं मिलता, और AI भी नहीं मिलता है। ठीक है, और जो भी कार का जो भी अलाउंस है वो प्राइवेट पूल तक ही, सॉरी बिजनेस यूज तक ही अलाउड है, उसके इससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। So you can write it in the notes column, whatever I did. I suggest you to write it on your own, or else you can just read it out. Okay? Okay, all right. Let's jump onto the another topic. So, देखो, I have a PPT. I've shared this with you guys, and will also share whatever the changes are. Okay? See this. So we did this question. Okay. Process देखते हैं। प्रोसेस ऑफ कैपिटल अलाउंस कंपटीशन, दो हमने ये कर लिया है, बट yeah, जस्ट फॉर थियरी पर्पस आई वांट यू टू, लाइक आई गो थ्रू इट। सबसे पहले जो भी रिटन डाउन बैलेंसेस है, ओपनिंग बैलेंस होता है। ओके, सब में करते हैं हम, ओपनिंग बैलेंस जो होते हैं वो नोट डाउन कर लेते हैं। जस्ट लाइक दैट, जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस है फॉर रेस्पेक्टिव पूल वो आपको नोट डाउन कर देना है। और जो भी एक्सपेंडिचर, सेकेंड स्टेप है, जो भी एक्सपेंडिचर्स आपका एआई से क्लेम हो रहे हैं उसे आप नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, लिस्ट डाउन क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर, फॉलोइंग ऑर्डर है स्पेशल रेट पूल, मेन रेट पूल, एंड एनी एक्सेस एक्सपेंडिचर रिलेवेंट टू द पूल। ओके, स्पेशल रेट पूल का व्हाट इज द लॉजिक, बिकॉज 6% अलाउंस ही मिलता है उसे, रिटर्न ऑन अलाउंस ओनली 6% है एज कम्पेयर टू मेन रेट पूल 18% है, इसलिए हम उसे पहले क्लेम करेंगे। उसके बाद आप क्या कार एक्सपेंडिचर्स को कंसिडर करोगे एट द कॉस्ट ऑफ द कार क्वालिफाइंग फॉर रिटर्न ऑन अलाउंस। ओके, EIA के लिए कभी भी कोई कार क्वालिफाई नहीं करती, WDA रिटर्न ऑन अलाउंस के लिए ही क्लेम करती है। उसके ऊपर रिटर्न ऑन अलाउंस ही हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे असेट्स का जो भी डिस्पोजल है। ओके, वन मोर थिंग वी आर फॉरगेटिंग इन दिस, आई गेस इट्स नॉट रिटन। यहाँ देखो, प्राइवेट यूज ऑफ द कार भी हमें नोट डाउन करना है, शॉर्ट लाइफ असेट्स भी, उससे पहले शॉर्ट लाइफ असेट्स, प्राइवेट यूज कार विद CO2 ग्राम्स लेस मोर देन, या दिस इज लेस देन 50 ग्राम्स। ओके सॉरी, लेस देन 50 ग्राम्स, वो नोट डाउन करना है। उसके बाद हम डिस्पोजल्स नोट डाउन करेंगे, मतलब इन शॉर्ट ये फॉर्मेट ही है जो थियोरी में दिया है। ओके, असेट्स के डिस्पोजल में दिस इज अगेन गिवन कि लोअर ऑफ योर सेल्स प्रोसीड्स और योर कॉस्ट से डिस्कस कर डिडक्ट करेंगे। फॉर नॉन पुल असेट्स डिडक्ट सेल्स प्रोसीड फ्रॉम द टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू एंड कंप्यूट द बैलेंसिंग एडजस्टमेंट। नॉन पुल असेट्स कौन से हो गए, प्राइवेट पुल, शॉर्ट लाइफ असेट्स। ओके, रिटर्न डाउन अलाउंस कैसे क्लेम करेंगे, कंप्यूट द अवेलेबल रिटर्न डाउन अलाउंस और टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू।
from the previous year, return now, deduct from the tax return down value. Okay, for FYA for the electric car, list a new car purchased during the year, claim 100% FYA, फर्स्ट ईयर अलाउंस तो 100% ही क्लेम हो रहा था, है ना? ओके, ऑलराइट, ये काफी सही क्वेश्चन है, काफी मस्त, लाइक अच्छा क्वेश्चन है. We have a lot more questions to do. Okay, this is short period of account. ये last slide है. Okay, ये कौन सा है? If you remember, हमने सबसे पहले टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग किया था, उसके जैसा ही है. सेकेंड टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग जो किया था, उसमें कुछ कम पीरियड था, ये सेम है. और उसके बाद का जो क्वेश्चन है, विच यू हैव टू डू ज्यादा मोर longer than 12 minutes का पीरियड. Okay, let's do this question. Which one is comprehensive question. Okay, चलो करते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है? Let's start. This is your activity 4. Mr. Plum commenced trading on 1st April 2021. Adjusted profits before capital allowance for the 3 periods of accounts were for 31st March 2022, 165,000 pounds. 31st March 2023, 175,000 pounds. And 24, 150,000 pounds. Okay. देखो, इसमें से जो भी कैपिटल अलाउंस है वो हम डिडक्ट कर देंगे फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, ठीक है? Additions and disposals of eligible for capital allowance for cost and proceeds. Okay. देखो, ये जो भी दिखाया है वो सारे एडिशंस है. Okay, furniture, office furniture, 22,000. Computer except useful life 3 years and residual value expected useful life is 3 years and residual value is nil. 10,000. Okay. Cars CO2 emission 180 gram, 14,000. Special rate pool 90 grams. Special rate pool 45 grams. Main rate pool, ठीक है? And equipment expected useful life is 30 years. More than 25 years is long life asset. Long life asset is your SRP asset, है ना? Okay. Now for the next year. Year ended 31st March. Additions van 20,000. Car 5. Fifth car 50 grams. Okay. Now here there is a confusion. Like काफी लोगों को होता है कि अब 50 grams है तो 50 grams तो किधर आएगा? तो अगेन 50 ग्राम्स वाला जो भी एसेट है वो होगा आपका मेन रेट पूल एसेट. द रीजन फॉर दिस इज कि देखो 0 to 50 ग्राम्स एंड 51 ग्राम्स से लेके जो भी एसेट्स है वो सारे हो गए स्पेशल पूल एसेट्स. तो यस, ये हो गया आपका मेन रेट पूल एसेट. ऑफिस फर्नीचर ओरिजिनल कॉस्ट इज 3,000 एंड ये तो डिस्पोजल हो गया, ठीक है? 1,200. तो हम ये वैल्यू लेंगे. कार 1 13,200 दी है. कार 1 की वैल्यू है दिस वन, तो हम इस वैल्यू पे डिडक्ट कर देंगे. प्राइवेट पूल भी दिया है. Year ended 31st March 2024. Computer purchased in the year. Disposals purchased in the year ended 31st March 2022. वो डिस्पोज हुआ है 2000 पे. तो 2022 में कंप्यूटर कौन सा परचेज है? यस, 10,000. ये शॉर्ट लाइफ एसेट है. वैल्यू 2000 से हम डिडक्ट कर देंगे, है ना? लोअर ऑफ लेंगे वैल्यू, इसीलिए. कार 1 and 5 are subject to 40% of private use by Mr. Plum. All other cars are used by employees whose private use is 30%. जो भी एम्प्लॉयज का कार यूज है वो हम बिजनेस यूज ही कंसिडर करते हैं. और जो भी मिस्टर प्लम, जो भी बिजनेस ओनर है, उसका जो भी प्राइवेट यूज है उसे हम प्राइवेट पूल में कंसिडर करते हैं, ठीक है? लेट्स सी क्या क्या पूछा है. कैलकुलेट द कैपिटल अलाउंस फॉर 3 years ending 31st March 24, assuming short life asset election and full allowance are claimed. Okay, short life asset कौन सा है? ये वाला था ना, कंप्यूटर था ना. 3 years यूजफुल लाइफ, लेस देन 8 years होनी चाहिए. लेस देन 8 years ही है, 3 years है. कैलकुलेट फाइनल टैक्स एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर ईच पीरियड. Okay. Calculate trading income assessment for all of the tax years using these profits. Okay. तो हमें ट्रेडिंग इनकम भी फाइंड आउट करनी है, हमें इनका जो भी है फाइनल टैक्स ईयर प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना है.
एंड कैपिटल अलाउंसेस भी करना है, ठीक है। तो फाइनल टैक्स एडजस्टेड प्रॉफिट और जो ट्रेडिंग इनकम होती है वो सेम होती है अगर डायरेक्ट प्रॉफिट दिया है तो, ठीक है। तो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होता है, चेंजेस होते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता है। चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। ओके, I'll copy the format to save time. You guys can refer to the format if you feel नहीं कुछ समझ आता तो। Just a second, what happened? For the year ended, first year ended is 31st March 2022। ये काफी बड़ा क्वेश्चन है which will take the time तो लेगा। ओके, स्पेशल रेट पूल असेट का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस कितना है? एडिशन है ना, सीधा एडिशन दिया है। बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड तो दिया ही नहीं तो हमें कंसिडर करना ही नहीं। डोंट राइट दैट। डायरेक्टली एडिशंस, एक एक स्टेप हम स्किप कर रहे हैं, ये वाला स्किप हो जाएगा ना फिर, क्योंकि दिया नहीं है तो कहाँ से लेंगे। ब्रॉट फॉरवर्ड वैल्यू तो है नहीं, स्टार्ट है ईयर का, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, पीरियड एंडेड तो देखा ही नहीं, क्या है? 1 April 2020, 12 months here। एडिशंस क्वालिफाइंग फॉर EIP। ओके, सबसे पहले इट इज लॉन्ग लाइफ एसेट, लॉन्ग लाइफ एसेट, ठीक है। एडिशन वैल्यू इज, व्हाट इज द वैल्यू? Okay, one thing what I'll do and what I recommend you to do whenever you watch this recording, please open the question because I have to go up and down again and again. So I'll keep the question aside, okay, and we'll do it from that itself, okay. So 75,000 is the value of the long life asset. That pool qualifies for your AAA. Okay, now you will add all of the assets which qualifies for that. So office furniture, car doesn't qualify, that's why we are not taking consideration of that. Okay, then computers, short life assets also qualify for FIA, for EAA, right? तो 22,000 आ गया, इसकी वैल्यू है 22,000 एंड इसकी है 10,000। टोटल क्या है इसका? EIA पूरा 1 million है अभी तो हमारे पास बहुत सारा, तो यस वी कैन क्लेम EIA फुल, ठीक है। माइनस, याद रखना सिंबल साइन का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि क्या आता है एग्जाम में गलतियां बहुत होती है, इससे गड़बड़ बहुत होती है, ठीक है। ये था आपका लॉन्ग लाइफ एसेट का पार्ट, सो जीरो बिफोर दैट एंड मेक जीरो। ऑफिस फर्नीचर आपका था अगेन इसका पार्ट, ओके। मेन रेट पूल एसेट, ये था आपका शॉर्ट लाइफ एसेट का पार्ट, ओके। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पे क्या है कि प्राइवेट पूल दो असेट्स है प्राइवेट यूज के लिए। कार वन, कार वन, तो आई विल हैव टू यू नो कंट्रोलर, कंट्रोलर जो लेफ्ट साइड वाला है वो कॉपी कर देगा। और ज्यादा कॉपी करना हो तो जैसे मुझे ज्यादा जगह पे कॉपी करना है तो यहाँ तक मुझे ड्रैग, फर्स्ट से लेके लास्ट तक ड्रैग करना पड़ेगा, कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल जेड इज ऑब्वियस, कंट्रोल जेड वर्क्स ऑन योर स्टडी प्लेटफॉर्म एज वेल। सो यस, शॉर्ट रेट पूल जीरो, माइनस, थोड़ा इधर से उधर करोगे चलता है, बेटर कर देते हैं।
Just a second. Just let me change the formatting for easy explanation. Just a second. Here it will be car 2. All right. Okay. Now let's see other additions. Okay. इसके अंदर कार 1 इज फॉर द प्राइवेट यूज. ठीक है, तो वो हम प्राइवेट यूज पूल में डाल देंगे 14,000. प्राइवेट यूज कार 1 अगेन यहाँ 14,000. ओके. कार 2, कार 2 CO2 एमिशंस भी नोट कर सकते हो आप. कार 2 हो गया 90 ग्राम्स, 20,000. ये प्राइवेट पूल नहीं है, मोर देन 50,000 है. या 50 ग्राम्स है, तो ये हो गया स्पेशल रेट 2. सो SRP. फिर कार 3 हो गया आपका. कार 3 हो गया आपका. कार 3 इज 45 ग्राम्स 18,000. 45 grams and that means 18,000. So that is here. एक और चीज है, इक्विपमेंट है एंड कार 4 है जो है इलेक्ट्रिक कार. ओके. इलेक्ट्रिक कार क्वालिफाइज फॉर FIA और ये सबसे लास्ट में हम क्वालिफाई करते हैं, है ना. आफ्टर क्लेमिंग ऑल द रिडक्शंस एंड एवरीथिंग. ओके. WTA क्लेम करने के बाद हम क्वालिफाई करते हैं. यहाँ पे देखो एक फॉर्मेट है जिसमें देखो FIA सबसे लास्ट में है ना, सबसे लास्ट में हम वो ऐड करेंगे. ठीक है. तो ऑलराइट, लेट्स सी. Just let me just give me a second. Okay, but there is one more addition which is long life asset, more than 30 years. Okay, and 75,000 है इसका, इसकी वैल्यू है. No, just a second. Yeah, we claimed for the long life asset, na? So we'll not add it here. We'll only do for the cars and the remaining allowance, everything. Okay. लेफ्ट एरो, शिफ्ट लेफ्ट एरो, सब में ही करना है. शिफ्ट वाला तो शॉर्टकट काम करता है आपका ACC स्टडी का प्लेटफॉर्म पे. ठीक है. इसके अंदर WDA SRP 6%, SRP 6%, MRP 18%. फिर आ गया शॉर्ट लाइफ एसेट 18%. है ही नहीं कोई प्राइवेट पूल है जो जिसका. जस्ट सेकेंड इधर लिया था ना. कार 1. कार 1 एंड 5. ओके. तो कार्बन 40% प्राइवेट पूल है, 60% जो है वो बिजनेस यूज है. ठीक है. तो प्राइवेट पूल, प्राइवेट पूल 6% SRP में आएगा ना, इसलिए 6%. ओके. लेट्स कैलकुलेट. SRP से 6%, 0.6, 1200, 0.1 दिस वन. यहाँ पे हम पूरा ही क्लेम तो करेंगे, 0.06 क्लेम तो करेंगे, पर अलाउंस कॉलम में सिर्फ इसका बिजनेस यूज पोर्शन विच इज 60%, उतना ही अलाउंस मिलेगा. ओके. माइनस दिस. ओके. ऑलराइट. अब एज पर द फॉर्मेट यू विल डू एडिशंस टू FYE. Okay.
zero new electric car value is 16,000. FYE is 16,000. Okay. इलेक्ट्रिक कार होता है मेन रेट पूल का पार्ट, सो मेन रेट पूल में जीरो वैल्यू, FI तो एनीवेज 100 ही होता है, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट. 16,000. Okay. Now let's calculate the written down uh, at WDV carry forward allowances. Carry forward balance and allowances. Okay. Okay. One more thing. यहाँ पे हमने एक तो अलाउंस क्लीन किया है ना, तो मेक श्योर दैट यू हैव एडेड एवरीथिंग जो भी अलाउंस कॉलम में क्लीन किया है. Oh, just a second. There is a error. Balance column वहाँ था. Okay. Control. All right. यहाँ पे जो भी अलाउंसेस आपने क्लेम किए हैं वो सारे ऐड कर देंगे हम. ठीक है. जस्ट अ सेकेंड. और भी है. ओके. ये जो भी अलाउंस है अभी, दिस वन इज योर फर्स्ट कैलकुलेशन जो ए रिक्वायरमेंट है. फॉर बी रिक्वायरमेंट, ओके लेट्स डू वन थिंग. अभी तो हम यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी बी रिक्वायरमेंट सेपरेटली कर लेंगे. ठीक है. एंड दिस इज फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022. 31st March 2023, sorry. No, just a second, 22. It will be 22 ना. यहाँ बैलेंस कौन सा दिया है? 22 दिया है. Okay, sorry. It's 2023. Yeah, for sure 2023. I'm sorry. 2023. Sorry, just a second. 2022, 23, 24. Yeah, it's 2022. I saw for the another question. 2022. I'm writing it just for so that at the end we can take up the value from this one. Okay. Now for the year ended, 2023. Okay. Written down value brought forward. ओके. अब जो भी वैल्यू है वो सारी ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे हम. सेम, बाकी कुछ चेंजेस तो है ही नहीं इसमें जो है. अभी इस ईयर में कौन से एडिशन है क्वालिफाइंग फॉर FI, क्वालिफाइंग फॉर AIA, वो सारे हम नोट डाउन करेंगे. क्वालिफाइंग फॉर AIA, दैट इज योर सेकेंड ईयर में कौन से एडिशन है. लेट्स सी. 22-23 में है एक वैन 20,000, कार 50 ग्राम्स है. MRP एसेट हो गया. ऑफिस फर्नीचर ओरिजिनल कॉस्ट 1200. डिस्पोजल है ये तो. ठीक है चलो. वैन वैल्यू इज 20,000. ओके. सो वैन ये हो गया मेन रेट पूल एसेट का पार्ट. ओके. एनी एसेट जो भी स्पेशल रेट पूल में आते हैं, उसके अलावा जो भी एसेट्स है वो सारे मेन रेट पूल में ही जाता है. तो ये तो आता नहीं है स्पेशल रेट पूल में, इसलिए ये चला जाएगा मेन रेट पूल में. तो विच इज 20,000 लेस ENA. ठीक है.
माइनस AIA, स्पेशल रेट पूल, मेन रेट पूल, सॉरी। Then there is car. Car never qualifies for AIA, इसीलिए हमने car ऐड नहीं किया. But car, fifth car. Okay, fifth car is also for the private use. है ना, private use है ना इसमें. 40% of the private use, and the value is 50 grams and 30,000. So 50 CO2, 50 grams CO2 emission, CO2 emission, emission. Private use है, and what is the value of the car? It is 30,000. This यहाँ पे आएगा इस कॉलम में 30,000. ओके, उसके बाद there are some disposals happen. So disposals, first of all, it's office furniture. ऑफिस फर्नीचर जो भी आपका मेन पूल एसेट का पार्ट है ना, तो मेन पूल ये वाला है. लोअर ऑफ योर कॉस्ट एंड disposal proceeds, so which is 1200 is your lower of value. And car 1, जो भी प्राइवेट यूज कार थी, कार 1, जो भी प्राइवेट यूज असेट्स है उसमें जो भी बैलेंसिंग वैल्यू होती है उससे just a second. What is the value of the car 1? Okay, sorry. Here also we will take the lower of value. और जो भी या बैलेंसिंग वैल्यू जो होती है प्रीवियस ईयर की, जो भी हमने ब्रॉट फॉरवर्ड वैल्यू उसमें से डिडक्शन हो जाएगा. ठीक है, 13,300. कार 1. This is a very big question. I have to go the again and again up and down. Here, 13,200. Same disposal proceeds will be at the lower of. Okay. That's all. Let's calculate the total of. यहाँ पे हमें मिला है बैलेंसिंग चार्ज रेदर देन बैलेंसिंग अलाउंस. तो बैलेंसिंग चार्ज जो होता है वो तो डिडक्ट हो जाता है. सबसे पहले विल डू WTA फॉर SRP, MRP, प्राइवेट. जो भी बैलेंसिंग चार्ज है उसका हम देखेंगे. सबसे पहले SRP का लेट्स सी 0.06, MRP का देखेंगे 0.0.18, एंड इसका बैलेंसिंग चार्ज है माइनस सेम वे, राइट. 0. कौन सा था ये, मेन रेट पूल एसेट का पार्ट था. कार्बन कौन सा, सॉरी, कार्बन इज 180 ग्राम, सो SRP माइनस 0.06, 2.4. इसका सिर्फ 60% ही है जो क्लेम कर सकता है, जो डिडक्शन में जा सकता है. ओके, सेम वे हम करेंगे अलाउंस कॉलम में. -10, you'll get this one, -10 minus 60% of it, minus 60% of the carbon, 0.6.6. Okay, no, just a second. Here is an error. You can directly claim the balancing charge ना. बैलेंसिंग चार्ज तो डायरेक्टली डिडक्ट ही हो जाता है. ओनली 60% जो बैलेंसिंग चार्ज है वही डिडक्ट होगा. तो बैलेंसिंग चार्ज लिखूंगी मैं इधर. बैलेंसिंग, when you do this kind of questions at that time, like you might get confused. 60% आएगा, right? And that too ये डिडक्ट हो जाएगा.
यहाँ माइनस वैल्यू बनेगी, हमें डिडक्ट करना है ना इसलिए। एंड यहाँ पे बेटर कि यहाँ पे हम प्लस वैल्यू लगा दें, माइनस। ओके, written down allowance is correct, and this is your okay, for this is your private pool asset। इसका भी हम रिटर्न डाउन अलाउंस कैलकुलेट करेंगे। फिफ्थ कार है जिसका मेन रेट पूल का पार्ट है, सो विच इज प्राइवेट पूल कार, फिफ्थ कार 0.18, again 60% only, 0.6। Now everything is recorded। Controller, and this is your total allowance claim for that particular year। कुछ अलाउंस तो नहीं है। For the year ended 1228। Okay, here we didn't record this 20,000 na? Now it's correct। Allowance claim again, let's copy। ऐसे जो क्वेश्चंस होता है, it might take some time, but whenever you practice तो स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। Here I have to explain, that's why it takes some time। Okay, अब देखो, ईयर एंडेड 31st मार्च हमने कैलकुलेट कर दिया। अब ईयर एंडेड 31st मार्च 2024 कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिस्पोजल्स भी हैं आपके। देखो सबसे पहले लेट्स सी, सारे डिस्पोजल ही, कोई एडिशन तो है ही नहीं, है ना। तो डायरेक्टली हम डिस्पोजल ही नोट डाउन करेंगे, और ये सीजेशन भी नहीं है। यस, सीजेशन भी नहीं है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू ब्रॉट फॉरवर्ड disposals, that is car is getting disposed, right? Computers, that too for 2000, and what was the value? 10,000। Computers, computer was a part of main pool asset, right? Sorry, yeah, no, sorry, it is a part of the short life asset because life is less than 3 years, right? So main pool short life asset यहाँ पे fall करेगा, -2000, -2000 will be the value of the deduction, okay, disposals, and yes, is there anything available? No, that's good। WDA, ओके, डब्ल्यू देखो यहाँ पे ये आपका बैलेंसिंग चार्ज आ गया अगेन, तो ये जो पूरा वैल्यू है ये तो पूरा डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएगा। सो आई विल राइट बैलेंसिंग चार्ज हियर, चार्ज, okay, so this will be deducted from your allowance column, balancing charges 2000। सो अलाउंस कॉलम में से ये तो पूरा डिडक्ट ही हो जाएगा। अब इसके ऊपर हमें कैलकुलेट करना है, इसके ऊपर ये SRP सेट है, तो माइनस आएगा ना 0.06 minus 0.18, okay, and here it was again, it's fifth,
So what is car fifth thing? 50 grams MRP, 18% weight. But uh, SRP WDA 6%, MRP WDA हो गया आपका 18% हो गया. फिर इधर हो गया आपका प्राइवेट पूल, प्राइवेट कार. WTA इज 18% बिकॉज ये मेन रेट पूल का पार्ट होता है. ओके, यहाँ पे आप क्लेम करोगे, यहाँ पे पूरा क्लेम मिलेगा. यहाँ पे सिर्फ बिजनेस यूज पोर्शन पे ही आप क्लेम कर सकोगे, which is 0.6%. Okay, this is only the allowance you can claim. अभी यहाँ so this much is the balance carry forward. Sum, just a second, just minus plus sign difference. That's all. Upside. Here also there is an error, minus sign error. Now it's correct. Your allowance column will be this total allowance. Okay? Total allowance for the year ended 31st March 2024. Okay, so that's it. We are done with our first part, A part. Okay, let's do B part of it. Very easy. B part is very easy actually. See, you are asked to find out the final tax adjusted profit, and the next one is trading income assessment for all the tax year using these profits. Okay. Okay. So final tax adjusted profit. Okay. Profit before capital CA capital allowance, final adjusted profit. Okay, here also you can add a line, all workings are in pounds, or else let me add here. It's very easy. Alter 156. Quickly you can do. Alter 156. Okay, all right. So what is the period? 12 months, year end. I'll write year end, 12 months. 2022, 2023, 2024. What is the profit? Before that, let's note down the capital allowances. Okay, this one is for the last period. This one. Okay. Go on this. Okay, this is a shortcut which will work on only Excel, but you will have to scroll. This is for this one, this period, third period. I meant control and up arrow. That will directly go into the total, right? Bold it, everything. What is the profit given? 165, 175, 150. 165, 175, 150. So this is your profit. Okay, tax adjusted final period profit. For trading income, what is your trading income? जो profit होता है वही तो trading income होती है ना? तो third part, which is C part, trading income.
और कुछ तो दिया है नहीं। टैक्स फॉर द टैक्स ईयर, फॉर द टैक्स ईयर 2022 to 2024. Okay, so year one 2021 to 2022, year ended year ended 31st March 31st March 2022. Control D. This is year two, and this will be your 22-23, right? 22-23 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा year 3, एंड ये हो जाएगा आपका 24, एंड दिस विल बी 23। ओके, यहाँ थोड़े चेंजेस बाकी है। ईयर एंडेड 23, ईयर एंडेड 24, which is your directly assessed profit. So, this one, this one. Okay, that's it. Done with the question. How easy it was, ना? Easy था ना, इतना मुश्किल नहीं था। बस इस क्वेश्चन में सब कुछ मर्ज्ड अप है। तो आपको ये क्वेश्चन करने से पहले सारे रूल्स क्लियर होने चाहिए। That's it. With this question, let's do one new topic now. Okay. Okay, let's start with a new topic, that is your structure building allowance. This is the last topic of your capital allowance chapter. Okay, structure building allowances. That is SBA, structure building allowance, which is SBA. इसमें क्या है, एसबीए में क्या होता है, जो भी आपका बिल्डिंग है, अनयूज्ड बिल्डिंग होती है, जब भी परचेज करते हो आप अनयूज्ड बिल्डिंग को, ऑन द परचेज ऑफ अनयूज्ड बिल्डिंग, so I'll just note down the rule. Okay, unused billing, purchase of unused billing for business use is eligible for SBA. Okay? जो भी असेट है, ओके, फर्स्ट रूल, जो भी आपका परचेस्ड बिल्डिंग है वो अनयूज्ड होनी चाहिए, वही एलिजिबल है। अभी क्या होता है, बिजनेस यूज के अंदर अगर वो बिल्डिंग के ऊपर आप पर्टिकुलरली ट्रेड कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, वो पार्ट और एलिजिबल है। अगर आप कुछ पार्ट नहीं कर रहे हो तो उतना पार्ट एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा अगर आपने किसी को लेट आउट किए, रेंट पे दी है, वो भी एक बिजनेस यूज पर्पज हो गया, ठीक है, उतना पार्ट भी एलिजिबल है एचबी के लिए। वन मोर थिंग, इन दिस लैंड इज नॉट कंसिडर्ड। बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है ना, सो दिस इज अ बिल्डिंग एंड दिस इज अ लैंड, ठीक है। यहाँ पे ओके, फॉर दिस इज फॉर द प्राइवेट यूज, ओके, सो दिस विल नॉट क्वालिफाई, दिस इज फॉर बिजनेस यूज, सो यस दिस विल क्वालिफाई। ओके, आई नो माय ड्राइंग इज वेरी बैड, नो वरीज। समझ आ रहा है, बस वही इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ दिस इज लैंड, so yeah, your land will not qualify for SB again. लैंड विल नॉट क्वालिफाई फॉर एसपीएफ। ओके, तो मतलब जो भी अगर आपको कंबाइंड वैल्यू दी है ना, तो एसपी कैलकुलेट करने के लिए आपकी जो भी कंबाइंड वैल्यू है माइनस लैंड, सो आई राइट इट हियर, टोटल वैल्यू माइनस लैंड आपकी होगी, इस वैल्यू के ऊपर आप करोगे। वन मोर थिंग, ये जो होता है ये टाइम अपोर्शन भी है, टाइम अपोर्शन।
मतलब अगर कोई भी एडिशन ऑफ द बिल्डिंग हुआ इसी करंट पीरियड में हुआ है और लेट्स से 8 मंथ्स के लिए ही हुआ है, तो आपका जो एसबीए है, एसबीए जो अलाउंस है विच यू गेट 3% पर ईयर एंड दैट टू फॉर 33.33 ईयर्स, ओके, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे मिलता है, ओके, एंड 3% इज द परसेंटेज कंसिडर। ये आपका होगा टाइम अप्रोच, मतलब 3 3% मल्टीप्लाई whatever the building value divide by 12 multiply 8 months whatever the months is, so this is n I will write, okay। उसके बाद जब आप डिस्पोज करोगे, uh, so that is disposal, okay। डिस्पोजल के टाइम पे सी, यहाँ पे नो बैलेंसिंग अलाउंस, बैलेंसिंग अलाउंस और चार्ज, मतलब पता है आप बस ये वाला करते हो, हाँ, कोई भी डिस्पोज करते हो तो आपको बैलेंसिंग अलाउंस और बैलेंसिंग चार्ज मिलता है, आप वो कैलकुलेट नहीं करोगे इस पे, ठीक है। बैलेंसिंग अलाउंस होता था जो हमें अलाउंस क्लेम करना बाकी था, वो डायरेक्टली हम निल वैल्यू ले जाते थे, वहां पे हमने पढ़ा, पर यहाँ पे हम वो नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी अलाउंस अब तक क्लेम्ड थे वो सारे एड बैक हो जाएंगे, सो एड बैक ऑल द अलाउंसेस क्लेम्ड, अलाउंसेस क्लेम्ड, ठीक है। और जो परचेजर है, ही और शी विल कंटिन्यू टू क्लेम इट फॉर 3%, और जो भी 33 ईयर्स 3% अलाउंस पर ईयर क्लेम करना स्टार्ट करेगा, WDA ये, ओके। और दैट टू जितने years रिमेनिंग है आउट ऑफ 33.33 उसमें, लाइक सपोज यू यूज योर एसेट फॉर 3 years देन यू सोल्ड इट, तो सिर्फ 30.33 ईयर्स के लिए वो जो परचेजर है वो यूज करेगा अपना ये, सिर्फ उतने पीरियड के लिए वो WTA क्लेम कर पाएगा, ठीक है। लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन दिस, just a second, and yes, this is the last topic. We'll do two questions. Okay. Initially, I planned to do one, but I thought let's do two questions of it. One is your additions, SPA, SPA, SPA. Okay, which is your sixth question. Bella prepares accounts on 31st March each year. Bella renovated a unused, right? Retail shop at a cost of 100,000. The shop had originally been purchased in 2016. The renovation was completed on 15 June 2023 and the shop was bought into use on 1st August 2023. तो हमें जो भी उसके पहले का जो भी यूज है, जो भी वैल्यू, उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे, तो हम वही कंसिडर कर रहे हैं जब से वो बिजनेस यूज में आई है, ठीक है। जब से मतलब जो बिल्डिंग है बिजनेस यूज उसका स्टार्ट हुआ तब से ही हम कंसिडर करेंगे। सो जो भी रिनोवेशन है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग भी होगा, सो दैट क्वालिफाइज फॉर SPA। सो रिनोवेशन qualifies qualifies for SBA. SBA. Year end is again calculated balance SBA for the year ended 31st March 2024 and for the subsequent periods. Okay. Okay. All right. So for 31st March 2024 SBA, and your building was brought into use for the business from 1st August. Okay, so August, September, October, November, December, Jan, Feb, March, 8 months हो गए, ठीक है। So it will be 100,000 multiply 0.03 which is 3% multiply 8 divided by 12. Okay, so for this particular year, just a second, all the work. So for this particular year, you will claim SBA at this one. तो जो भी आपका SBA का एसेट का वैल्यू दिया होगा ना, उसमें से आप ये डिडक्ट कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद आप उस वैल्यू जितना बचा है उसके ऊपर क्लेम करोगे, ओके। एंड यस, अगेन
वन मोर थिंग, सॉरी, जो बचा है उसके ऊपर नहीं, जो भी ये स्ट्रेट लाइन बेसिस पे होता है, तो 3% फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड, ओके। सो SBA फॉर सब्सिक्वेंट पीरियड, because this is for the straight line, this is calculated on the straight line basis, no, that's why जो initial value है उसके ऊपर हम claim कर रहे हैं, ठीक है। Now there's a one more question which is a kind of example. Look, so everything is given in that example itself, but I'll attach this here तो कि अच्छे से समझ आ जाए, which is your seventh one। Okay, देखो, this includes your disposal के rules। ओके, Davina prepares. This is the same. Okay, it was Bella. Davina prepares accounts on 31st March each year. Davina purchased a newly constructed factory building on 1st June 2023। 6 मंथ्स का WDA होगा उस पर्टिकुलर ईयर के ऊपर, उस पर्टिकुलर ईयर में 6 मंथ्स का होगा, आपको SB क्लेम मिलेगा। 3% मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12, इंक्लूडिंग लैंड ऑफ 100,000। The factory was bought into use from 1st October 2023। Oh, I'm sorry, बिजनेस यूज से कंसिडर करेंगे, 1st अक्टूबर से कंसिडर करेंगे, ना कि 1st जून से। आई एम सो सॉरी, या जब परचेज किया उसका 6 मंथ। सो इट विल बी, व्हाट इज द परचेज वैल्यू, अगेन द सॉल्यूशन इज गिवन, लेट्स लुक एट इट। 35,000 माइनस 100, इसके ऊपर यू विल कैलकुलेट अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब मार्च, 6 मंथ हो गए। सो SBA फॉर 31st March 2024। So this one will be 0.03 multiply 6 divided by 12. Okay, this SPA will be claimed for this much value. Okay, and SPA available on, I hope it is clear। अभी यहाँ देखो, दवीना सोल्ड अ फैक्ट्री ऑन 1st April 2024, तुरंत नेक्स्ट ईयर पे सेल कर दिया टू जैक्सन फॉर 4,50,000 or else for 50,000, including land of 150,000। Jackson also prepares account on 31st March। From the year ended 31st March 2025, Jackson will claim 7,500 annually based on Davina's original क्वालिफाइड एक्सपेंडिचर। ओके, यहाँ देखो, यहाँ पे ओरिजिनल क्लेम कितना हो सकता था, 0.03 हो सकता था, दैट्स व्हाई दिस इज रिटन। ओके, एग्जाम में क्या होता है, ये आपको दिया नहीं होगा। सो फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड जो भी आपका ये क्वालिफाई करेगा और जो भी लेगा उससे ये क्वालिफाई करेगा, ठीक है, 3% के ऊपर क्वालिफाई करेगा। सो दवीना सोल्ड फैक्ट्री। ओके, all right, so what will be the disposal, what will be the disposal? See, no, at the time of disposal अगर आप फूल प्रिपेयर कर रहे हो तो नो बैलेंसिंग चार्ज और नो अलाउंस, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एड बैक ऑल द अलाउंसेस क्लेम। सो डिस्पोजल प्रोसीड्स, सी डिस्पोजल प्रोसीड्स, एड बैक द अलाउंसेस क्लेम, क्लेम। व्हाट इज योर डिस्पोजल प्रोसीड्स, यहाँ पे आप पूरे असेट की डिस्पोजल प्रोसीड कंसिडर करेंगे, ठीक है, विच इज 4,50,000 इंक्लूडिंग द लैंड वैल्यू, ओके, प्लस द डिस्पोजल प्रोसीड्स allowance claim for that particular year less cost। This is how you calculate the gain, right? So which is 3,50,000। So this is your chargeable gain। अब ये चार्जेबल गेन है वो आप करोगे CGT वाले पार्ट में, इसके ऊपर आप CGT के सारे भी इम्प्लीकेशंस लगा दोगे। तो टेक्स्ट में पता है ऐसा नहीं है कि आपको एक टॉपिक आ गया तो दूसरे टॉपिक करने की जरूरत नहीं है, बट इट्स ऑलवेज लिंक्ड, क्योंकि अगर कोई एसेट सेल हो रहा है तो वहां पे आप CGT का पार्ट कंसिडर कर दोगे, इसीलिए। ओके, नाउ जो भी दवीना है, दवीना नहीं, जैक्सन है, जैक्सन अब जैक्सन विल क्लेम फॉर, जैक्सन विल claim for
32.33 ईयर्स, बिकॉज एक साल तो ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो 32.33 ईयर्स के ऊपर होगा। और वो भी Jackson, the SBA will run for remaining 32 years and 33 months. Okay. 32 years and 10 months for 33, 1 divided by 3. 33, 1 divided by 3, 1, 3, 3, 3 is same. Okay. Commenced on 1st October 2023. Okay. All right. So, yes, and this is the claimable value which Jackson will claim. You guys can have a read of it. Okay. Now let's see. Let's see the PPT. I have completed most of the topic from your this capital allowance, most of the questions, like जो मुझे लगता था कि प्रॉब्लम दे सकता है वो मैंने कर दिया है। बेसिक्स मैंने समझा दिया है। अभी आपके पास बचा है ये वाले कि शॉर्ट वाले शॉर्ट पीरियड ऑफ अकाउंट्स एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ अकाउंट्स, यू हैव टू ट्राई इट ऑन योर ओन। और ये जो लिस्ट है एग्जाम के क्वेश्चंस की है, सो प्लीज डू इट ऑन योर ओन। एक स्टडी टेक्निक रखो, कोई भी टॉपिक कंप्लीट होता है उसके क्वेश्चंस करो। स्टडी ऑफ लो, आप अपना एसीसीए कैप्लान की स्टडी टेक्स्ट ले लो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। जब तक आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक से लाइक पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आ जाता, तब तक आपको मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन करना वहां तक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मूव टू योर एग्जाम के क्वेश्चन। ओके, सो एग्जाम के क्वेश्चन साथ के साथ करते जाओ, तभी आपको रूल्स याद रहेंगे, वरना तो नहीं रहेंगे लास्ट तक। इफ यू कीप योर एग्जाम के टूवर्ड्स से लास्ट, लास्ट में टाइम ही नहीं बचेगा और रूल्स भी याद नहीं रहेंगे, विच विल क्रिएट अ पैनिक सिचुएशन। सो बेटर है अभी से एग्जाम के क्वेश्चन स्टार्ट करो, सो टूवर्ड्स द एंड जब आप कर रहे हो तो आपके लिए काम कम होता जाए। वन मोर थिंग, प्लीज स्टार्ट लाइक नोटिंग इट डाउन कि कौन से क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगे, हाईलाइट दैट। ओके, सो जब नेक्स्ट टाइम करो, सो यू हैव टू पे मोर अटेंशन टू दोज क्वेश्चंस, और जो नहीं डिफिकल्ट लगे वो आप एक बार में कर लोगे, मतलब वो ऊपर ऊपर से देख लेना। सो दैट्स अ स्टडी टेक्निक which I used to follow and I also recommend my students to follow. So yeah, that's it. Bye bye guys, see you in the next class, next video. And yeah, one more thing, please tell me which topic you want me to record. I'll record that particular topic. ठीक है, कौन सा टॉपिक चाहिए वो मुझे बता दो, मैं वो टॉपिक रिकॉर्ड कर। Okay, so yeah, that's it for today. Bye, see you guys in the next video.